हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 58। इसमें हमें इंग्लिश का एक पैसेज दिया है, इसको शॉर्ट एंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इफ आई annoy you in the deliverance of my opinion, comma, as the chances are I may, comma, put it down to a reading man's reverence for books, comma, and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour for him. Full stop. Think of these significant facts, comma, and your frowns and your frowns may vanish full stop if you have a love of books, comma, you will feel no loneliness. If and when men forget you, full stop, you can dispense with them in the circumstances, colon, for you will have within yourself comma, through the brains of your authors, comma, many better men to replace them, full stop. The balance of advantage in the change is likely to be in your favor. Likely to be in your favor, full stop. You will grasp the
Significance of this remark, comma, I am sure, colon, for the man who derives pleasure from reading books makes for himself reserves of strength to call upon against the time of trouble or stress, full stop। ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरी दूसरी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।